हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपने लास्ट वाली वीडियो देखी है और लास्ट वीडियो में जो हमने आप अपना पढ़ा था, अब उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है, कैसे होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो गैमेट्स हैं, ये गैमेट्स प्रोड्यूस कौन करता है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अब यहाँ पे क्या होता है, इट कैन बी सिंगल इंडिविजुअल और इट कैन बी टू इंडिविजुअल ऑफ ऑपोजिट सेक्स टू प्रोड्यूस द गैमेट्स। ओके, देन दीज गैमेट्स आर गोइंग टू गेट फ्यूज्ड। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं नंबर में। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंट स्पीशीज, ठीक है। सो जब ये हाफ नंबर ऑफ गैमेट्स जो एक साथ आपके फ्यूज होते हैं, दे प्रोड्यूस जाइगोट। दैट मीन्स जाइगोट इज डिप्लॉइड, ठीक है, टू इन नंबर। देन व्हाट इज हैपनिंग, द ऑफस्प्रिंग दैट इज गोइंग टू गेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस टाइम, दे आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। दैट मीन्स वो अपने पेरेंट्स के जैसे एग्जैक्टली नहीं दिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे बट वो सिमिलरली एग्जैक्टली अपने पेरेंट की कॉपी नहीं देखते थे, ठीक है। तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग वेरिएशन होगा। वेरिएशन क्यों दिख रहा है, क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी मदर से आ रहे हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे फादर से आ रहे हैं, तो हमें एक नया वेरिएशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। देन दिस प्रोसेस इज इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। दैट मीन्स ये जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप पे क्या होते हैं, हर एक चीज़ प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका सबसे पहले क्या है, गैमेट्स प्रोड्यूस होता है, देन गैमेट्स गेट फ्यूज, दे फॉर्म जाइगोट एंड देन दे प्रोड्यूस अ ऑफस्प्रिंग। बट टू प्रोड्यूस दीज गैमेट्स एंड टू लीड अ रिप्रोडक्टिव लाइफ, द इंडिविजुअल हैज टू गो थ्रू वेजिटेटिव फेज। व्हाट इज वेजिटेटिव फेज, इट इज अ जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज क्या है, ये फेज होता है ग्रोथ फेज। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ फेज। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी क्या होती है, ग्रो करती है, डेवलप करती है मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली। दैट मीन्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स क्या करते हैं, डेवलप करते हैं एंड लीड यू टू द रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्ट यानी कि आपके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अब क्या है, फंक्शनल है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों में जो है आपके गैमेट्स की जो बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि गैमेट्स जो है वो एक या दो प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। यू कैन सी दिस फ्लावर इन माय हैंड। आप मेरे हाथ में ये फ्लावर देख सकते हैं, ठीक है। एंड हियर इफ आई पुट माई फिंगर, अगर मैं अपने फिंगर को यहाँ पे स्टेमन पे लगाऊं, सो यू कैन सी दिस पोलन डस्ट। ओके, अब ये केवल एक पोलन ग्रेन नहीं है, ये बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था ना, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स, इलेबोरेटेड, स्लो प्रोसेस है, तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं आपके। एंड ये स्टेप्स कौन से होने वाले हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ इवेंट्स होंगे, फिर आपका फर्टिलाइजेशन होगा ऑफ गैमेट्स एंड देन गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन के बाद आपका क्या बनता है, जाइगोट बनता है। लेकिन आपका क्या होगा, उसके बाद आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि अब जाइगोट के साथ आगे क्या होगा। इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट टू processes are taking place. First is gametogenesis and second is gamete transfer. Okay, so first we will study gametogenesis. Gametogenesis क्या होता है, gametogenesis is formation of gametes, यानी कि gametes का production. And as I have already told you that they are haploid. Haploid means they will be half in the number of the parent species. The chromosome will be half in the number of the parent species, and these gametes can either be isogametes, ठीक है, and or they can be heterogametes, ठीक है। So first we are going to study about isogametes, ठीक है। आइए आपको मिलाते हैं isogametes से। So here you can see these isogametes are similar to each other, यानी कि एक जैसे दिखते हैं। मेल और फीमेल गैमेट में आप कोई डिफरेंस नहीं कर सकते, okay? Then second is your heterogametes. Heterogametes are dissimilar to each other. They do not resemble each other, ठीक है। And these male and female are known by different names. So male can be called anthrozoids or sperms, known as female gamete is also known as egg or
ovum. For the production of gametes, we need reproductive organ. Okay, so reproductive organ can be on the same parent or it can be on the different parent. ठीक है ना? In case of plant, if we talk about plants, so they can be bisexual or unisexual. Bisexual means both the male and female part. That means stamen and pistil are present on the same flower. ठीक है? Here you can see these are your pistil. That means this is your female reproductive organ and this is your male reproductive organ, and these two are present on the same flower. So bisexual, or they can be unisexual. Unisexual means present. That means either the male reproductive organ or the female reproductive organ. So if male is present to staminate, they are known as staminate, or if female it is there, so it is known as pistillate. Okay. In some of the fungi, because fungi, the body of the fungi is known as thallus, so they can be homothallic or monoecious or bisexual. That means, and they can be heterothallic. That means dioecious, or unisexual. That means they. In case of some earthworms, sponge, leeches, or tapeworms, these lower organisms, these can be hermaphrodite. Hermaphrodite means both the sex organs are present on the same organism. Mature at different times. यानी ठीक है, ये क्या करेगा आपके सेम ऑर्गेनिज्म के gametes को फ्यूज होने से रोकता है. So these gametes are produced in the parents, but these parents can be haploid or diploid. ठीक है. So in these both cases, what is happening is, in haploid, because the number of chromosomes in the haploid parent will be n. अब हम n को और रिड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है. तो यहाँ पे कौन सा आपका सेल डिवीजन होने वाला है? माइटोसिस. ठीक है. दिस दैट मीन्स आपका जो गैमेट बनेगा, दैट विल ऑल्सो बी n in number. ठीक है. Now in diploid parents, what is happening? There are specific cells which are known as myocytes, which are also known as gamete mother cell. ठीक है. ये आपके reproductive organs में होता है, and these myocytes are going to undergo meiosis. Meiosis को हम reductional division भी कहते हैं. Reductional division का मतलब होता है it will reduce the number of chromosomes to half in the gametes. That means the gametes will be n number of chromosomes. Understood? In here, what is happening? And when the gametes are being produced, these gametes can be motile or non-motile. ठीक है. So maximum time the male is motile and the female is non-motile. So in cases of algae and teratophytes, this will be water. In case of angiosperms, angiosperms are the flowering plants. ठीक है. It will be pollination. तो या तो क्या हो सकता है, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है. ठीक है. या फिर क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है. यानी कि अगर इस फ्लावर में देखें तो आपका क्या होगा, द मेल गैमेट इज गोइंग टू गेट ट्रांसफर टू द फीमेल ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द सेम फ्लावर. ठीक है. और व्हाट विल हैपन, इट कैन ऑल्सो गेट द पोलन ग्रेन्स कैन ऑल्सो फॉल ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट of the another flower of the, in the case of unisexual flower. Unisexual मतलब एक ही, या तो staminate होगा या फिर आपका क्या होगा, pistillate होगा. Pollination, pollen grains are going to fall on the stigma of the flower, and there the pollen grain is going to germinate with the help of pollen tube. Okay. And then from this pollen tube, this pollen tube is going to carry the male gametes inside it, and these male gametes are going to be released inside the ovule. Now next step, as I told you, is fertilization. In fertilization, what is happening, the gamete that is produced in the pre-fertilization event during gametogenesis, अब वो क्या होंगे, फ्यूज होंगे. तो as I told you that these gametes are haploid. ये क्या होता है, इसमें आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं पेरेंट स्पीशीज के. ठीक है. तो इसमें क्या है, द स्पर्म फ्रॉम द male and the egg from the female is going to fuse and produce zygote, which is diploid in number, 2n in. Fertilization can take place by two processes, taken by two different methods. It can be external or internal. ठीक है. ये दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्सटर्नल और इंटरनल. नाम से पता चल रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर आपका फर्टिलाइजेशन होगा. ठीक है. और इंटरनल मीन्स ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन आपका क्या हो रहा है. ठीक है ना. अच्छा, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स.
and one of the term which we can use for that is syngamy. अब क्या होता है, in mostly this external fertilization is taking place in amphibians and fishes which are found in the water, यानी कि उनको मीडियम है, ठीक है ना, ट्रांसफर होने के लिए गैमेट्स को. तो इसमें क्या होता है, in cases of fishes, this female fish is going to lay the egg. Okay, it is going to release the egg in the water, and just after that the male also starts releasing the sperms, and these sperms are going to swim towards the egg, and these eggs are going to get fertilized. Secondly, they are very vulnerable to predators, यानी कि वहाँ पे आपके क्या होंगे, दूसरे predators होंगे which are going to feed on these eggs, ठीक है ना. तो अगर आपके 100 एग में से 80 एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं तो भी उसमें से केवल क्या है, आपके 20 या 30 ही बच पाते हैं आफ्टर दे आर एक्सपोज टू द प्रीडेटर्स, यानी कि कुछ तो प्रीडेटर्स से होंगे, कुछ आप एक अदर फैक्टर्स की वजह से क्या होंगे, फर्टिलाइज नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना. सो इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वन ऑफ द लिमिटेशन इज और डिसएडवांटेज इज दे आर वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स. इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन व्हाट इज हैपनिंग, द फ्यूजन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है. द एग इज प्रोड्यूस, एग क्या होता है, आपकी फीमेल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, एंड द स्पर्म इज रिलीज इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है. तो बेसिकली इट इज सीन इन फंजाइज, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इन सब में ये देखने को मिलता है. फीमेल बॉडी के अंदर क्या है, गैमेट फ्यूजन हो रहा है और जाइगोट डेवलप हो रहा है. ओके, नेक्स्ट and the last event that is going to take place in the sexual reproduction is your post-fertilization event. यानी कि अभी तक आपका क्या बन चुका है, गैमेट का फ्यूजन हो चुका है, यानी कि सिंगैमी हो चुकी है, उसके बाद आपका जाइगोट बन चुका है. लेकिन अब क्या होने वाला है, एम्ब्रियोजेनेसिस होने वाली है, एम्ब्रियोजेनेसिस होने वाली है. एंड इन ड्यूरिंग दिस एम्ब्रियोजेनेसिस व्हाट इज हैपनिंग, एम्ब्रियो क्या होता है आपका, डेवलप होता है. डेवलप मीन्स ग्रो करेगा, ठीक है. जाइगोट बना, जाइगोट तो क्या है, एक वन सेल है, सिर्फ एक सेल है, लेकिन हमें तो पूरा फीटस चाहिए, ठीक है, हमें नया ऑफस्प्रिंग चाहिए. तो उसको डेवलप करने के लिए हमें क्या, हमारा ये वाला प्रोसेस हमारा क्या होगा, शुरू होगा, ठीक है ना. इसमें क्या होता है, जाइगोट आपका क्या होता है, विल अंडरगो सेल डिवीजन. फर्स्ट सेल डिवाइड इनटू 2, देन इट डिवाइड्स इनटू 4, एंड इस तरीके से आपका क्या होता है, द नंबर ऑफ सेल्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, ठीक है. आपका क्या होता है, सेल डिवीजन होता है और सेल का नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है. अब क्या होता है, लेकिन आपका क्या होता है, जैसे जैसे आपके सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं आपका क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होना शुरू. आपका डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है, इट विल मॉडिफाई इनटू स्पेशल टिश्यू एंड ऑर्गन, यानी कि आपके ऑर्गन फॉर्मेशन यहाँ पे शुरू होने वाले हैं, ठीक है. एम्ब्रियोजेनेसिस आपका यहाँ पे शुरू हो जाता है, ठीक है ना. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, some steps are going to take place over here. The detail you are going to study in the second chapter, which is the sexual reproduction in the flowering plants. Okay, so here just we will need a small introduction of it. So first in plants what is going to happen, microsporogenesis. It is the development of male gamete. That means आपके पोलन ग्रेन्स यहाँ पे क्या होंगे, फॉर्म होंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. सेकेंड है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एग, ठीक है. उसके साथ उससे पहले आपका क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, क्योंकि आपका जो एग है वो ओव्यूल के इनसाइड ही प्रोड्यूस होता है, अंदर ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है. आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, व्हेन योर मेल गैमेट यानी कि पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस, ये पोलन ग्रेन्स आपके थ्रू पॉलिनेशन क्या होंगे, आपके स्टिग्मा पे आके लैंड होंगे एंड रीच द ओव्यूल. वहाँ पे वो गैमेट्स रिलीज होंगे, आपके फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है. वहाँ पे आपका एंडोस्पर्म बनता है. यहाँ पे आपके 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं जिनको डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें से आपका एक सिंगैमी होता है. आपको एक चीज़ और बता दूं कि पोलन ग्रेन के अंदर आपके 2 मेल गैमेट होते हैं, ठीक है, 2 न्यूक्लियस होते हैं, मेल न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें से एक आपका फीमेल या एग के साथ क्या होता है, फ्यूज हो जाता है. उस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगैमी. एंड सेकेंड इज आपका ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें आपका अदर मेल गैमेट जो होता है वो जाके आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या होता है, फर्टिलाइज होता है. एंडोस्पर्म डेवलप हो, आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, यानी कि आपका जाइगोट जो बन चुका था अब वो डेवलप होना शुरू होगा इन अ स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है. And then what will happen, your ovary is going to develop into fruit and your ovule is going to develop into your seed,
And in the cases of animals, what all events are going to take place during that? First is your gametogenesis. Gametogenesis, in male it is known as spermatogenesis, यानी कि sperm formation, process of sperm formation, and in female it is known as oogenesis, यानी कि formation, the process of formation of ovum. Okay, and after that what will happen? Fertilization is going to take place, and in zygote is formed after that, syngamy, and then what is happening? Embryo is developed, this, and your fetus is going to develop, and after the gestation period, newborn is given birth. There's one more process in which we do not need fertilization. Okay, this process is known as parthenogenesis, and in this what is happening? The female gamete will directly develop into a new individual. Okay, it does not gets fertilized by the स्पर्म. यहाँ पे क्या होता है? फीमेल गैमेट क्या होती है? डायरेक्टली आपकी क्या हो जाती है? न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाती है विदाउट गेटिंग फर्टिलाइज्ड. फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता ही नहीं है. एंड इन दिस केस दिस इंडिविजुअल इज नोन एज पार्थेनोजेनोम. ठीक. एंड स्पेशली इट इज सीन इन योर बी, योर लिजर्ड. ठीक है, इन सम केसेस. इन दिस व्हाट इज हैपनिंग? द क्वीन बी will lay the egg. Okay, and this unfertilized egg will directly develop into a drone. This drone is your male bee. Okay, and this male bee is going to produce sperm. This sperm it is going to produce by the help of mitosis. Okay, this mitosis, when process is taking place and the sperm is being produced, this sperm is going to fertilize the other unfertilized egg or produced by this queen, and it is going to produce either queen or worker bee. So only the queen is fertile over here and the worker bee is infertile over here. For sexual reproduction in female, there is two type of cycles which are seen. Okay, one is known as estrous cycle, other one is known as menstrual cycle. The estrous cycle is basically seen in the non-primates like sheep, dogs, and these type of animals which come under non-primates. Okay, and these you can see takes place during a breeding season. These are the cyclic changes which are taking place in the ovary of the female. Okay, in this the hormonal changes are taking place and the egg is being produced. Now in menstrual cycle what is happening? It is the cycle which takes like 28 to 29 days on an average they are taking. ठीक है, ये 28 से 29 दिन का लेता है. and basically it is seen in the primates like आपके apes हैं, आपके humans हैं, तो इन सब में ये menstrual cycle देखने को मिलता है. and these during this time the ovary keeps on changing and they produce the egg which has to be fertilized. So there are some continuous breeders and there are some seasonal breeders. Seasonal breeders का मतलब है they will breed during a season, and continuous breeders means they can breed any time of the year. The main factor is your age factor which is going to help in this, because after attaining the reproductive phase only these cycles can start. ठीक है, but after attaining a certain age this menstrual cycle or this cycle is going to stop. एक